आई विल जस्ट क्विकली रिवाइज कि हमने लास्ट क्लास हमने स्टार्ट किया था क्लास ऑब्जेक्ट. So class and object, these are two fundamental understand. Class guideline, class is a logical था. और ये जावा में या कोई भी प्रोग्राम क्लास would be derived from the category. Class is just a visualization of object. Analogy हमने इस घर बनाने से तो पहले आप स्ट्रक्चर बनाते हो, उस स्ट्रक्चर का यूज करते. क्लास इज अ स्ट्रक्चर ऑफ प्लान blueprint to create that actual house. So that actual house is nothing. Object plan is nothing. ये एनर्जी लास्ट टाइम कहा था. और जो भी आप इंस्ट्रक्शंस वॉट एवर स्टेटमेंट एज पार्ट ऑफ प्लान दैट इंस्ट्रक्शंस द क्लास और मेमोरी एक में था जेबी मार्क. देयर आर डिफरेंट क्लास कैसे क्रिएट करते हैं. व्हाई व्हाट इज अ क्लास. व्हाई डू वी नीड ऑब्जेक्ट. हाउ डू वी क्रिएट द कीवर्ड क्लास नेम. और उसके बाद ये डेटा यानी वेरिएबल्स ब्लॉक्स. ओके. नाउ सी हियर ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट अगर आपको क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज क्लास और इट इज अ इंस्टेंस. हमने देनी है. और ऑब्जेक्ट क्या होता है. ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट क्रिएट और वी नीड ऑब्जेक्ट परफॉर्म ऑपरेशन. एग्जाम्पल बैंक अकाउंट अगर आपका ओपन द बैंक अकाउंट इज देयर एंड यू बैंक अकाउंट ओपन होगा तभी आप विल बी एबल टू विथड्रॉ ऑपरेशन कब कर पाओगे आप. आपका बैंक अकाउंट का मतलब होता है योर ऑब्जेक्ट देयर देन ओनली नीड ऑब्जेक्ट. और जो ऑब्जेक्ट होता है मेमोरी these ऑब्जेक्ट्स ही. और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से आपको क्या होना चाहिए. वो क्लास का यूज फ्रॉम द गिवन क्लास यू कैन ऑफ. तो ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट लास्ट टाइम. सिंटैक्स write the class name, then you write the reference equal to, then you followed by class name, reference keyword, class name as construct the new key, create a new. ये पहले हमने देखा था टैक्स और एक हमने बैंक अकाउंट क्रिएट किया क्लास स्ट्रक्चर. दर ऑल सम इस क्लास का इस केस में ये वाला अकाउंट इज अ रेफरेंस एंड दिस बैंक अकाउंट और ये ब्रैकेट के साथ कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट व्हाट कंस्ट्रक्ट द बैंक अकाउंट द क्लास ने. और हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट हाउ टू क्रिएट. व्हाई डू वी नीड क्लास. व्हाई डू देन वी टॉक्ड अबाउट देयर आर क्लास. हमने क्लास कम 5 blocks and variables. We have 3 categories. Static methods, we have instance methods, static methods,
constructors we have three types: default constructor, parameter, parameter. Clearly we have blocks, block and block. Nested classes we have categories. एक nested class सारे उसमें से हमने वेरिएबल और कंप्लीट उसमें फिर हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज अ वेरिएबल, व्हाट इज अ मेथड। वेरिएबल क्या होता है? जस्ट नेम गिवन टू मेमोरी दैट पर्टिकुलर कंटेनर। वेरिएबल का वेरिएबल द डेटा syntax how to create a variable. We need data type, variable name equal to or value. This is a syntax. Int age equal to is a data type, age is a variable name, equal to is a so fifth code inside that container has a memory address as then based on the content of that particular container have two types of variables. Now data can be of two types, primitive type and दूसरा कौन सा है non primitive. अगर variable which contains a primitive type of value, that variable will be primitive variable. If a variable which non-primitive, byte, short, long, float, double, char, boolean, कोई भी और टाइप का डेटा तो उस टाइप के वेरिएबल और रेफरेंस कॉल्ड एज नॉन प्रिमिटिव और रेफरेंस reference examples here equal to here is a reference student equal to new student this is a reference variable and डेटा टाइप भी हमने डिस्कस किया था कि डेटा टाइप के मतलब वी नीड वेरिएबल इज जस्ट वेरिएबल ऑन so in order to store the data of the container then we'll be able to store the data and then apply the first step we need to have a container so to allocate the memory data type then we write the label that is variable and then we assign the data type it specifies the size data the then there are two different types of data types primitive and non so primitive means they are defined already byte short are primitive data types. Then based on the usage of variable, we have three types of variables, local and static variable. Local variable, this is also variable. The use of variable is to store the data. The data कौन सा हो सकता है? Primitive या now it is a variable which is defined inside a method, inside a block or inside the class. The class के location देखिए आप पता now why do we use local variable? We use local variable to store some intermediate or yeah, that we already seen. Then local variables store the data which is not specific to object or not common for all of them. It's just an example. Now I have let's say 10,000 customers. 10,000 customers का average balance find. For that purpose I need some different intermediate. तो उसके लिए आप use. Now these local variables are stored in stack memory. Also remember local variables are created inside the method constructor how to define a local variable and how to access that. Now local variables are defined inside a method, inside a block or inside a constructor. तो इनको आप डिफाइन वही करोगे और यूज भी वही पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही डिफाइन करोगे और वही पर यूज दिस इज हाउ वी डिफाइन द instance variable sorry local variable string name equal to such is also local variable args is also local variable because this is the non primitive this is primitive इनको एक्सेस कैसे करोगे डायरेक्टली आप directly access कर not need any tricks or stuff can directly now instance variables now variables which are created inside the class but outside of all methods outside of all construct outside of all blocks without a static key ऐसे वेरिएबल बोला जाता है
नाउ इंस्टेंस वेरिएबल्स आर फोर ऑब्जेक्ट्स। कल बहुत सारे बैंक अकाउंट, सबका डेटा, सबका अकाउंट नंबर, डेटा स्टोर। हाउ डू यू स्टोर दैट? स्टोर दैट data using the, now these variables are stored, now this is also data, now the as part of the object. How to create instance variables, access them? Access instance variables. This is how we, these are the defined variables. These are the variables, these are instance variables. और इनको कैसे एक्सेस करते हो, कब मेमोरी मिलता है? इन सारे वेरिएबल्स को मेमोरी मिलता है जब आप ऑब्जेक्ट, कब मिलता है मेमोरी? आप ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, देन ओनली। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मतलब ये सारे एक्सेस कैसे करते हो? जो आपको रेफरेंस मिला है, रेफरेंस डॉट वेरिएबल, रेफरेंस डॉट। Then we also discuss static variables, variables which are created inside the class, but with the, see here, static key outside of all methods setter block, static. Now these variable, now for all the bank customer, bank name will be same. So this is some common for all of the, this in for all of the. Now these variables, static variables are used common for all of the objects, and these will be initialized before you even create object. Object create होने से पहले वेरिएबल्स, राइट, कब मिलेगा? एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। जैसे आपका क्लास मेमोरी में लोड होता है, दीज आर द वेरिएबल्स। और ये भी मेमोरी है, तो कहाँ पर मेमोरी मिलेगा? विच वेरिएबल्स विल बी द क्लास और मेथड, क्लास और मेथड मेमोरी। इनको कैसे डिफाइन करोगे? दिस इज हाउ वी डिफाइन। और उनको कैसे एक्सेस करोगे? डिफाइन किया मतलब वेरिएबल क्रिएट किया, डेटा स्टोर किया, फिर लेटर ऑन उस डेटा को मुझे एक्सेस, कैसे एक्सेस करोगे? क्लास नेम डॉट वेरिएबल, क्लास नेम डॉट एक्सेस। ये सारी चीज पार्ट में जस्ट। देन वी डिस्कस अबाउट मेथड आल्सो, discuss about method also. What is a method? So method is nothing but a step by step guide or set of instructions that are given to the computer. So why do we write programs? Why do we write programs? In order to complete tasks with the help of computer, that it is going to reduce your efforts and time then, right? इसलिए हम प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम की जो कहाँ पर लिखते हैं? Methods are the building blocks where we will write the instructions for a particular. Now there are two things. Method, आप जब भी आप method देखते हो, you should define that. There are two things about the method. Method is nothing but a step by step perform a task. say मैगी का रेसिपी that is defined, ऑटोमेटिकली मैगी बन जाता है क्या? जैसे आपने रेसिपी ले लिया हाथ में, क्या करना पड़ता है? उस रेसिपी में जो भी लिखा है से आपको एग्जीक्यूट। So similarly, we have to define the method, write the statement steps that is defined. Now you can use that method definition, that is called as definition. The instructions लिखा है कि ऐसा ये task complete the step that is written. So that is called as method. That is just a recipe definition. और मेथड कॉल दूसरा क्या होता है? कॉल और इनोव, मतलब जो रेसिपी स्टेप्स एग्जीक्यूट। तो मैगी अपने आप, तो मेथड इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, curly braces has a name which put which has right written. क्या होता है, कैसे डिफाइन? सबसे पहले मेथड का नाम,
कर्ली ब्रेसेस के स्टेटमेंट, ऑप्शनल पैरामीटर्स, रिटर्न टाइम यानी आउटपुट कर सकते, एक्सेस मतलब प्राइवेट और पब्लिक। बहुत सारे रेस्टोरेंट का रेसिपी प्राइवेट रख, समथिंग लेट्स से यू से पब्लिक, दैट एनीवन access modifier, where access modifier is it common for all of the objects or not, that we can specify. देन उसके बाद हमने मेन मेथड लिखा था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आर्क्स, पब्लिक इज एक्सेस स्पेसिफायर, इसका मतलब होता है कि मेथड कॉमन है एनीवन, इट इज सम कॉमन, मतलब स्टैटिक मींस फॉर ऑल ऑफ द objects, void means does not return the method and the input or input की जरूरी होती है perform that task, right? Yes. So based on the input and output, we have four types. Now, four types of methods. Methods which accepts input as well as provides output. One method does not accept output. There might be some method does not accept but provides output. Methods which does not which accept the input does not output. सारी option. सब एक तो accept, दोनों no no या एक accept. देन मेथड कॉल और इनोकेशन कैसे करते हैं, यहाँ पर मेथड आपने डिफाइन किया एडिशन ऑफ नंबर्स, और उसे कॉल कैसे किया आपने, मेथड का नाम, पैरामीटर और जो भी 100 एंड 200, तो एक मेथड लिखा टू डू द एडिशन ऑफ 100 300 कॉपी हुआ इस नंबर 1 में और इन दोनों का एडिशन का 100 प्लस, ये मेथड डेफिनेशन एंड मेथड कॉल हमने। एनी क्वेरीज ऑन द मेथड पार्ट, कॉल करते, there is one small part of the method, we'll today continue on that. Now there are types of methods. Types of methods. What are the types of methods we have? There are two types of methods. Instance methods and static methods. So let's talk about the instance methods and static methods. Now I will tell you two simple scenarios. Now everyone uses banking. Everyone has follow them some account. Now when you say you are logging in, everyone is logging in. Everyone is performing the login into the bank. जो भी आपका इंटरनेट बैंकिंग आप लॉग इन कर, सारे लोग लॉग इन ही कर रहे हैं. नाउ इज इट अ कॉमन एक्टिविटी और इज इट अ स्पेसिफिक एक्टिविटी? आप लॉग कॉमन कैसे बोल, आप लॉग इन मतलब कॉमन सबका बैलेंस है, इट इज स्पेसिफिक टू यूजर. जैसे आप ट्रांसफर करते हो पैसे, इट अ कॉमन एक्टिविटी. विड्रॉ करते हो आप, विड्रॉ करते हो मतलब किसके अकाउंट से, किसके अकाउंट से, 10 मतलब वहां पर बैंक में आप देखते होंगे हजारों लोग वहां पर होंगे, हजारों लोग विड्रॉ कर रहे हैं, but everyone is performing withdraw operation, but that is their own, that is personal task, that is a personal task that is specific to that object, that operation, what is the operation we have, that operation is to that particular object, that operation or a task or a method is called as. और दूसरा क्या हो सकता है, स्टैटिक मेथड क्या होता है, ऑपरेशन विच कॉमन फॉर ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. एग्जाम्पल, लेट्स आपको बैंक का डिटेल्स देखना है, नाउ गेट द बैंक डिटेल, आप ऐसे नोटिस बोर्ड पे लगा देंगे the bank address, this is the working hours, this is the information or this is the task common for all of the objects. तो ऐसे मेथड्स आपको डिपेंड करना.
So you have a task which is for all of the objects. That method as static method. Based on you have two types of methods. One is specific to the object, common for all of the objects. Getting the bank details, the activity. Everyone will get the same information, but getting the check balance, mini statement, या आपकी खुद methods are these are specific. So the methods which are specific to an object are nothing but, right? We'll write two questions. First, what is it? What is it? Method defined without, मेथड तो आपको ऑलरेडी पता है, मेथड आपको ऑलरेडी पता है. स्टैटिक मेथड क्या होता है? मेथड विच इज डिफाइंड विद, so why do we need that? Why do we need perform object specific? Why do we need static methods? Perform to perform operations are why do we need static? Perform operations which are common for all of the. Why? What? Let's talk about how also. How do we define an instance? Class, or let's say class के अंदर आपके पास void called as, what is this? How to define the we know, and how to define static method. आपको बस क्या यूज करना, how to define, just write the to define the, how to call, how to call instance, how to call instance. आपने रेसिपी बना दिया, डिफाइन कर दिया, बट उसे कॉल नहीं करोगे तो देर इज नो. तो उस कॉल कैसे करोगे? हाउ डू यू कॉल दैट? वी कॉल इंस्टिंग रेफरेंस. कॉल करते हो दैट, इस पर्टिकुलर मेथड को मुझे कॉल करना है. कॉल दिस मेथड मेरे पास कहाँ से कॉल कर सकते हो आप? फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू कॉल दिस मेथड, मेन मेथड से या दूसरे कॉल कर सकते हो. लेट्स से मेरे पास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड से कॉल करना. याद रखना, मतलब आप मुझे बताओ बैलेंस चेक कब कर पाओगे, पैसे कब ट्रांसफर कर, जब आपका अकाउंट होगा तब. व्हेन यू आर एबल टू कॉल द ऑब्जेक्ट, द फर्स्ट वी नीड द ऑब्जेक्ट और तो डी डॉट your method. Similarly, how to call static method? We call static methods using write the static key
Static. Do you call this method? You don't need to have the object. You can directly call. What do you call? Class name. No dot. What is this method? The method which is defined without static keyword. Why do we need present of task specific to an object? The object specific operator. How do we define that? Define instance method without static. How do you call that? First create the object and then call the. What is static method? Static method is a method which is defined with the static method, and this method we need to write some object for all of it is common for all of the objects. Common. How do we define static method? We just write the static keyword. How to call static method? Call the static method class name dot method. Simple यहाँ तक clear. Find how do we call? कि हम देखते हैं कि method actually class में कोई other instance get some static. What I'm going to do, develop some what method, the bank account, what all operate. Have deposit method. The deposit method, what it is going to accept? It is going to accept some.
what it does, if your amount is greater than 0, then only you will add माइनस में बाद आपको बैलेंस was माइनस बैलेंस माइनस। तो आप क्या करते हो, अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है, क्या आप क्या करोगे, क्या करते हो, डिपॉजिट के टाइम बैलेंस प्लस दिस बैलेंस मस्ट बी बैलेंस प्लस करली क्या करोगे, विड्रॉ। विड्रॉ आप कुछ अमाउंट दोगे, अमाउंट के केस में क्या होना चाहिए, जो अमाउंट दिया है अमाउंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू, क्या करोगे आप, बैलेंस में। तो वी डिफाइंड डिपॉजिट एंड, अब मुझे क्या करना है, बैलेंस चेक द बैलेंस। हाउ आर यू गोइंग टू चेक द बैलेंस, गेट रिटर्न द रिटर्न, दिस हाउ इट विल, आप वैसे बाकी भी, लेट्स से आपको बैलेंस अकाउंट होल्डर कैन राइट द, बट गेट बैलेंस में लिख दिया, these are the three, I will write one static method, get bank, ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग में बैंक का नेम होगा, बैंक नेम प्लस प्लस लोकेशन, मेरे पास तीन मेथड्स है, मैंने अभी क्या किया, बस आपका क्लास डिफाइन किया, अकाउंट भी ओपन नहीं है, अभी आप मुझे बताइए अकाउंट ओपन नहीं है, आई विल नॉट बी एबल टू डिपॉजिट, तो डिपॉजिट मेथड एक्सेप्ट इनपुट, तो हम बैलेंस में क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट प्लस कर रहे हैं, द बैलेंस प्लस, कब करेंगे प्लस, जब आपका अमाउंट deposit amount, what is the amount you are trying to withdraw, that should be less than, तब आप बैलेंस, और गेट बैलेंस में आप सीधा सीधा बैलेंस। अब मुझे बताओ, बैलेंस में डायरेक्टली यूज कर पा रहा हूँ, नाउ दिस बैलेंस इज, टेल यू बैलेंस इज अ वेरिएबल, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि डिपॉजिट द अमाउंट, तो जब आप डिपॉजिट यू विल बी दैट डिपॉजिट मतलब इन योर अकाउंट हुज बैलेंस इज और बैलेंस, यू डू नॉट नीड टू एक्सप्लिसिट राइट कि ये किसका बैलेंस, बैलेंस किसका, जो ऑब्जेक्ट का उसका बैलेंस, दिस क्लास ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट हो उसका बैलेंस, so you do not need to write the balance, we'll talk about the other keyword, for now हमने मेथड्स डिफाइन करी, दोनों स्टैटिक मेथड, हम क्या करेंगे अभी, क्लास बनाते हैं टेस्ट, यहाँ पर अभी मेरे पास मेन मेथड यहाँ पर लिख रहा हूँ, नाउ I want to, I have two classes now, one is bank account and there is another test bank, मुझे क्या करना है, बैंक अकाउंट क्लास की मेथड्स मुझे कहाँ पर एक्सेस कर, टेस्ट बैंक, तो आप वो लॉजिक कहाँ पर लिख, अब मुझे इंस्टेंस मेथड्स कॉल करनी, इसकी बैंक अकाउंट, कैसे कॉल करोगे आप, आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, बैंक अकाउंट, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया,
फिर आप मेथड कॉल करोगे बैंक अकाउंट डॉट डिपॉजिट। लेट्स आई एम टेक इनिशियल तो जीरो होगा बैलेंस, आप इनिशियल तो बैंक अकाउंट का प्रिंटिंग डिपॉजिट बैलेंस। तो आपने कॉल कैसे किया मेथड को? रेफरेंस डॉट सेट नेम और अब मुझे क्या करना है, बैलेंस चेक। बैलेंस चेक करने के लिए आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डॉट गेट बैलेंस। बैंक अकाउंट डॉट गेट बैलेंस क्या करेगा, वो मेथड कॉल होगा, गेट बैलेंस करेगा आपको। फिर से मैं क्या करता हूँ, डिपॉजिट के बाद मैं विड्रॉ करता हूँ। आई विल जस्ट विड्रॉ बैंक अकाउंट डॉट विड्रॉ। दिस टाइम आई विल विड्रॉ 1000। आफ्टर withdrawal I will again check the balance after withdrawal. You created an object, you call the method using reference variable reference dot set name as the input। के बाद मैंने डिपॉजिट के बाद मैंने आफ्टर बैलेंस चेक करने के लिए मेरे पास एक बैलेंस में बैलेंस गेट बैलेंस बैंक अकाउंट डॉट गेट बैलेंस रन करती है। After deposit balance is still deposit 1000, you withdraw the 5500। after withdrawal your balance is, how do you call the instance? Call the instance of call of now I want to call static method। कैसे स्टैटिक मेथड कॉल करोगे आप? क्लास नेम, the class name bank account dot get bank details, this is how we call the static method। जो भी रिटर्न ये बैंक अकाउंट डिटेल मेथड है, गेट बैंक मेथड रिटर्न क्या करती है, ये कुछ बैंक का नाम और इज लुक एट static method। static method we call using class name dot class name and this is to cut long story short, how do we call instance method help of call static method। याद रहेगा। Let's take some let's talk about the methods assignment। First assignment, define two methods to print the maximum number respectively। क्या करना है आपको, दो मेथड लिख, मैक्सिमम एंड करना है, तो उनको इनपुट देना है मैक्सिमम मिनिमम, दोनों मेथड देना है और इन जो इनपुट वो प्रोसेस करेंगे, आउटपुट क्या रहेगा। लेट्स ट्राई टू डू। क्या करना है आपको, टू क्रिएट टू मेथड्स एंड
आई एम गोइंग टू राइट अ मेन। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, तीन थ्री नंबर थ्री। नाउ टू एक्सेप्ट द नंबर, स्कैनर क्लास, होप यू यूज स्कैनर डॉट इन। से हमें क्या होगा, एक्सेप्ट। तो स्कैनर डॉट पहला नंबर, ऐसे हम पर एक्सेप्ट कर। अभी हमारे पास तीन नंबर है। अब मुझे क्या करना है, ये तीनों नंबर दो अलग अलग मेथड। एक पहली मेथड होगी गेट मिनिमम नंबर, इसको आप तीन नंबर पास करोगे और ये रिटर्न क्या करेगी, रिटर्न करेगी, ये मेथड रिटर्न करेगी मिनिमम। आप यहाँ पर मेथड कॉल करो। अब ये मेथड कौन सी मेथड होनी वाली, स्टैटिक मेथड हो तो आप स्टैटिक मेथड सेम क्लास में लिख, और आप दूसरा क्लास भी लिख सकते हैं। दिस इट a separate class itself. So I will create the static method the same dot get class name dot head name। यहाँ पर आप इनपुट वन, यहाँ पर आपने मेथड कॉल किया गेट मिनिमम पर और उसे input किया तीन नंबर। अभी आपको ये मेथड क्रिएट करी है विच इज अ प्राइवेट या पब्लिक स्टैटिक इंट मेथड रिटर्न से गेट मिनिमम पर और तीन, यहाँ पर जो भी नंबर आप इनपुट दैट वैल्यू कॉपी टू। अब तीनों में से मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है, मिनिमम। मिनिमम कैसे डिफाइन करते हो आप, number 1 if number 1 is greater than or 2 and number 1 is greater than पर आप सीधा बोल दोगे else आप नंबर 2 को चेक करोगे, नंबर 2 is greater than number 1 and then obviously who is the max, number 2 else then condition of hope you remember। फर्स्ट कंडीशनल ऑपरेटर, ये ट्रू है तो नंबर 1 मिलेगा, और ये ट्रू है तो नंबर 2 मिलेगा, ये फॉल्स है तो आप ब्रैकेट दे सकते। सिमिलरली मुझे क्या करना है, मैक्सिमम फाइंड करना। क्या था मैक्सिमम, ग्रेटर देन किया था क्या हमने, गेट, हम एक और मेथड डिफाइन करेंगे गेट मिनिमम। में क्या करना है आपको, बहुत सिंपल, इज दिस ग्रेटर देन विथ लेस देन।
got minimum called the क्या किया, दो मेथड डिफाइन करी, गेट मिनिमम, गेट यहाँ पर आपने मैक्सिमम, यहाँ पर मिनिमम पर आपने डिफाइन किया और यहाँ कॉल किया लास्ट नेम डॉट, यहाँ पर आपने फर्स्ट फर्स्ट, अब इसमें से मैक्सिमम गेट एंड सिंपल। तो दूसरा एक और रूल आपको बता दूं, अगर आप कोई मेथड डिफाइन करते हो, मेथड डिफाइन कर, तो मेथड में कितने स्टेटमेंट, क्वेश्चन क्वेश्चन मतलब एक गुड प्रैक्टिस है, क्या गुड प्रैक्टिस है कि कोई भी मेथड आप लिखते हो, कोई टास्क लिखते हो, तो उसके अंदर कितने एक टाइम में आपको जितने में आते हैं, तब एक स्क्रोल में आप, तब अभी लेट से मैं कोई स्क्रोल कर रहा हूँ इसे, एक भी इतना जूम नहीं है, लेकिन नॉर्मल जो जूम होता है ना, एक बार में आपको मैक्सिमम 20 लाइन मतलब एक पूरे स्क्रीन में स्टेटमेंट, राइट, दैट मच इज अ गुड प्रैक्टिस। हर स्क्रोल में दिख, हर पूरा विदाउट स्क्रोल, आप बोलो कि मेरे पास बहुत सारे शब्द, आप क्या करोगे, यू ब्रेक डाउन द, लेट्स से मेरे पास 10,000 लाइन का एक टास्क है, अवर टास्क विच 10,000 स्टेटमेंट, आप एक ही मेथड में लिख, व्हाट यू डू, डिफाइन दैट, तब आप छोटी छोटी मेथड में भी 50, now close to 40 50 lines to 40 50, आपके पास देखो a lot of number of methods that, but you should have that one scroll, you should one scroll, so you should break down the task in मतलब जो भी कोई टास्क होता है ना, और छोटा ब्रेक डाउन कर सकते, अभी यहाँ पर भी बहुत सारा, अभी ये सिंपल आपको नंबर लिख रहा है यहाँ पर, गेटिंग द नंबर, 3 नंबर, इसमें बहुत कुछ और भी उसके मेथड्स हैं, एग्जाम्पल नंबर एक्सेप्ट करने का लॉजिक, नंबर एक्सेप्ट कर, फिर ये नंबर जो भी नंबर आप दूसरे पास दैट, मतलब जितना आप कट डाउन कर सकते, ट्राई टू क्रिएट, यू विल गेट हैंग ऑफ दिस, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, यू विल बी डिफाइन अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट वेदर द गिवन नंबर इज गिवन, है बट आप लिख सकते हैं, और अभी मैं एक मेथड लिख रहा हूँ, जस्ट डिफाइनिंग अ मेथड, नंबर चेकर, क्लास बनाए मैं नंबर, तो आप यहाँ पर मेथड लिख रहे हो, इन मेथड, यहाँ पर कुछ मेथड्स, जस्ट चेकिंग मेथड इज इवन, यहाँ पर मैं मेथड कॉल कर रहा हूँ इज इवन, नंबर कुछ पास करो 100,
अब मैंने क्या किया, डायरेक्ट कॉल क्रिएट, जस्ट गोइंग टू क्रिएट मी, क्या किया मैंने, एक मेथड डिफाइन किया, फिर क्या कर दिया, रिटर्न नंबर इवन है तो हम रिटर्न, नंबर इवन है तो हम रिटर्न, अदरवाइज क्या लिखोगे, मैं आपको एक नंबर मॉड इक्वल टू 0, 100 मॉड टू इक्वल टू 0, क्या रिटर्न आएगा, और मेथड लिख रहा हूँ मैं, मॉड इज नॉट इक्वल टू 99 मॉड 2, 99 मॉड 2 इज नॉट इक्वल, क्या करेगा, तो इज ऑड, इज 99 ऑड, ऑड टू इज 100 इवन, यहाँ पर आना चाहिए दोनों में ट्रू, यहाँ पर ट्रू आना चाहिए, और भी आप देखो कितनी छोटी छोटी, हाउ यू आर गोइंग टू राइट, यू आर गोइंग टू, यहाँ पर आपको बेसिक आपका अंडरस्टैंडिंग हाउ डू बी डिफाइन मेथड, तो यहाँ पर मैंने मेथड आप देखो होगा, यहाँ पर मैंने डायरेक्टली कॉल करी, मैं तो यहाँ पर क्लास नेम, बिकॉज वी आर इन द सेम क्लास में हो आप डायरेक्टली एंड डायरेक्टली, now just to conclude this I will tell you, आप pay attention, now pay attention, मेथड डिफाइन करना और डिफाइन करने के बाद उसे कॉल करना, अब मेरे पास एक कोई क्लास है एंड आई हैव क्लास नेम, यहाँ पर एक मेथड m1 मेथड, दिस इज have a static m2, right, क्लास ए के अंदर आपके पास, अब मुझे बताओ, अ, अब मुझे इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करना है, तो अब आपके पास दो ऑप्शन, व्हाट आर द टू ऑप्शंस, बताओ, आइदर कॉलिंग द सेम क्लास में आप कॉल कर सकते हो, क्या सेम क्लास में आप कॉल कर सकते हो केयरफुली, हर क्लास, यहाँ पर दो चीज, तो अब मुझे बताओ इस पर्टिकुलर मेथड, ये वाली मेथड कॉल कर, कॉल करेंगे दूसरे क्लास की बात, दूसरे क्लास में है, तो इस वन और कैसे कॉल, m1 आपकी इंस्टेंस है,
और m2 आपकी स्टैटिक मेथड। कैसे कॉल करोगे? सिंपल, इंस्टेंस में ऑब्जेक्ट चाहिए हो, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट डॉट अब मेरे पास एक स्टैटिक मेथड, एक स्टैटिक मेथड है। नाउ आई वांट टू कॉल दिस, यहाँ पर आपने m1 कॉल करी, अब m2 कॉल करना है, तो आप ऐसे कॉल करोगे कि पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको, डॉट मेथड नेम क्लास नेम डॉट, सेम चीज यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा, स्टैटिक मेथड डॉट, यहाँ पर डॉट, तो इंस्टेंस मेथड आप कैसे एक्सेस, रेफरेंस वेरिएबल स्टैटिक मेथड कैसे कॉल करते हो, ये रहे, राइट दैट, आई हैव अ क्लास ए के अंदर दो मेथड्स, राइटिंग void m1, एक एक और मेथड है मेरे पास, and then I have another class, और यहाँ पर मेथड है void एक static method, it's a main method, static method ठीक। पहला क्वेश्चन, ये दोनों मेथड मुझे पर्टिकुलर मेथड कॉल करनी, थोड़ा ये कॉल, के बाद डॉट, और m2 को कॉल करना है, कैसे कॉल करोगे, क्लास नेम डॉट, परफेक्ट, क्वेश्चन ये समझा सब। अब दूसरे क्लास की बात हो रही है, मतलब एक क्लास अलग है, दूसरा क्लास है, एक क्लास के मेथड दूसरे क्लास में मेथड में आपने ऐसे कॉल करे, स्टैटिक मेथड में भी आपको सेम ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और कॉल करी, तो दूसरी क्लास की बात तो बहुत सिंपल, हाँ वेरी, राइट दिस, क्लास, नाउ क्लास,
पहली चीज यहाँ पर देखो, डिफाइन किया मैंने, यहाँ पर देखो, इस मेथड को आपने कॉल मेथड, कैसे कॉल, डॉट स्टैटिक मेथड आपने क्लास नेम डॉट मेथड, यहाँ पर भी सेम आपने यहाँ कॉल करिए क्लास नेम, डिफरेंट क्लास, मतलब एक क्लास में मेथड डिफाइन है तो दूसरे क्लास में आप दूसरे क्लास में, तो आप मुझे बताओ हम मेथड को कॉल क्यों करें, व्हाई डू यू क्रिएट मल्टी, व्हाई डू यू क्रिएट मल्टीपल, ब्रेक डाउन अ टास्क, तो मिनिमम कितने टास्क होना चाहिए आपके एप्लीकेशन, वन, व्हाट इज दैट मेन टास्क, main method has your java application, minimum every java application has one minimum that task, मेन मेथड का काम क्या होता है, जो बाकी आप जो टास्क आते हो वो एग्जीक्यूट, क्या काम होता है मेन मेथड का, जो भी आप बाकी टास्क डिफाइन करते हो टास्क को एग्जीक्यूट करने का काम, तो मेन मेथड इज द इन फॉर योर जावा एप्लीकेशन, वहां से स्टार्ट होता है एग्जीक्यूट फर्स्ट टास्क, सेकेंड टास्क, थर्ड टास्क, फोर्थ टास्क, लाइक दैट वी डिफाइन, मेन मेथड इज द एप्लीकेशन, ये वाला फर्स्ट केस क्लियर है, क्लियर है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी, नाउ आई हैव वन क्लास, क्लास ए, देयर वी हैव, मेरे पास एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अब मुझे बताओ मेन मेथड से मुझे ये दोनों मेथड कॉल करनी है, कैसे कॉल करोगे, पहले तो विदाउट थिंकिंग डॉट, और दूसरा ए डॉट एम टू, आप एम टू मेथड कॉल करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन, ए डॉट एम टू भी कर सकते हो, आप ए डॉट एम टू भी कर सकते हो, या आप डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो, सेम आपके पास तीन स्टैटिक मेथड, क्लास नेम डॉट मेथड नेम, रेफरेंस डॉट मेथड नेम, या डायरेक्टली सिंस यू आर इन द आपने एक कौन मेथड डिफाइन, आपके पास, तो आपने इस M1 मेथड को कॉल किया, एक स्टैटिक से नॉन स्टैटिक, आपने पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट कॉल किया, मतलब कहीं से भी, मतलब टोटल चार केस, टोटल चार केस क्या क्या है, आप मुझे बताओ, एक क्लास है, एक क्लास के अंदर जो आप उसे कहाँ का है, सेम क्लास में, सेम क्लास या दूसरे क्लास में, दूसरे क्लास में कहीं से भी एक्सेस करो, आपको कंपलसरी क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर भी आप स्टैटिक मेथड से कॉल कर रहे हो मेन, तो आपको इंस्टेंस कॉल करना है, तो आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी क्रिएट करना है, तो आपके पास चार में से तब बस एक ही बार है, आई विल टेल यू दैट, यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रिएट करना, मेथड कॉल करना है, देन स्टैटिक मेथड आप क्लास नेम से एक्सेस कर सकते हो, रेफरेंस भी एक्सेस, डायरेक्टली में सिंस यू आर इन द, ये वाला वन लास्ट थिंग, अब मेरे पास
कोई एक मेथड है void m4 m, तो m3 मेथड से मुझे क्या करना है, m1 और m2 कॉल करना है। और तो m1 आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, या m1 को आप ऐसे भी कॉल कर सकते हो दिस डॉट वन, और m2 मेथड आप ऐसे भी कॉल कर सकते हो डायरेक्टली, a डॉट m2 भी कर सकते हो, या तो डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो आप, या आप दिस डॉट क्या बात हो रही है, एक नॉन स्टैटिक मेथड से एक नॉन, या फर्स्ट m1 मेथड एक m है, आपने m1 मेथड को कैसे कॉल, m1 मेथड भी कॉल कर सकते हो, डॉट भी कर सकते हो, m2 मेथड बस आप क्लास नेम से कॉल कर सकते हो, डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो, या जस्ट टू कंक्लूड कैसे कैसे कॉल कर सकते हो। अब कोई क्लास के अंदर क्या क्या होगी आपकी मेथड, एक इंस्टेंस मेथड हो सकती है या स्टैटिक मेथड, राइट। अभी इन मेथड को आपने डिफाइन किया, क्या किया, इन मेथड्स को डिफाइन किया, तो जस्ट डिफाइन द मेथड और स्टैटिक मेथड। गाइस, we have a class said that we have two methods, तो आप दूसरे क्लास में कैसे उसे करोगे, दूसरे क्लास में, दूसरे क्लास में यहाँ पर भी इंस्टेंस और स्टैटिक मेथड, क्या करना है आपको, कैसे कॉल करोगे आप, दोनों केस में क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्लास एंड दिस ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी डॉट डॉट, यहाँ पर भी आपको करना है सेम थिंग है, डॉट डॉट द फर्स्ट पार्ट। दूसरे क्लास में बहुत सिंपल है, मेथड कॉल करना है, आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, रेफरेंस मिलेगा, और स्टैटिक मेथड कॉल करना है, ये क्लियर है। अब दूसरा केस, नाउ यू आर इन ओनली वन क्लास, क्लास ए, यहाँ पर मेरे पास एक है void वन, void, but this is static method, is now I have another method void m, अब मुझे m3 मेथड में ये दोनों मेथड कॉल करना है, m1 एंड m, कैसे कंप्लीट, कैसे कॉल करोगे, ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट, आप डायरेक्टली कॉल करोगे ना, सेम क्लास स्टैटिक मेथड आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, या दिस डॉट कैसे कॉल करोगे आप, डायरेक्टली स्टैटिक मेथड कोई टेंशन, डॉट, या डॉट,
लेट्स से आई हैव अनदर सेम क्लास की बात, ठीक। कौन मेथड कॉल करनी है, डॉट, और फिर दूसरा कैसे कॉल करोगे, डॉट, डॉट। अब देखो आपको ट्रिक कहाँ पर हो, कैन यू सी दिस पार्ट, टेक ऑल दिस पार्ट्स। यहाँ पर भी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, पर भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कॉल किया, क्लास नेम डॉट मेथड, सेम चीज। आउट ऑफ 4 टाइम्स, आउट ऑफ 4 जगह पे आपका सेम, बस आपको याद कब write this. Okay, let's focus on this. Now, how do we call instance? That was the point, right? How to call? How to call? Let's focus on this. Instance methods can be called from same class, static method, different class, different class, different. I mean, चारों case except one. Same class, बस आपको ये exception, बाकी सारी जगह पे आपको object same class instance can be called or used. Have a class, तो M1 मेथड को सेम क्लास or you can call what, crux, the crux. We are talking about instance. Be clear है? Same class statics can be called from same class, से कॉल करना है, called say this is a यहाँ पर आपको
ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, कॉल कैसे, डॉट, हर जगह आपको different class that can be called using reference with different class instance, different class of this class class A dot class A class B, now void M, कोई भी रहे, क्लियर है। बस आपको फर्स्ट वाला केस याद रखना है, बाकी सब जगह सेम, हर जगह पे आपको ऑब्जेक्ट का यूज, और बाकी बचा काम हाउ टू कॉल स्टैटिक, हाउ टू कॉल static methods can be called from same class instance class static method different class static method, आपको कुछ की जरूरत है, can be called directly same class called now same class instance आप कॉल कर रहे हो, I have this static method, I will static method को कॉल कैसे कॉल करेगा आप डायरेक्टली, या can be called directly word or using a little but fine, same class static method क्लास की बात हो रही है, आपको ऑब्जेक्ट कौन डायरेक्टली कॉल कर सकते, कॉल यूजिंग different class instance can be called using variable और कॉल कर सकते क्लास नेम डॉट स्टैटिक मेथड इट कैन बी कॉल्ड यूजिंग, और बट आपको हमेशा याद रखना है क्या करना है, क्लास नेम, स्टैटिक मतलब ये स्टैटिक मेथड है आपके पास, आप दूसरे क्लास कॉल करना चाहिए, आप ऐसे कॉल कर सकते डॉट वन या डॉट, इन कंक्लूजन what you have to remember, static methods you are going to call using class name and in you are going to call, बट पहली केस कौन सी है, सेम क्लास को याद रखना है, बस एक ही चीज आपको याद रखने की, सेम क्लास इंस्टेंस मेथड फ्रॉम दिस सेम क्लास इंस्टेंस डायरेक्टली कॉल कर सकते या इसकी, बाकी सारी चीज़ें तो आपको हर क्या करना है, कॉल करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, रेफरेंस स्टैटिक मेथड कैसे कॉल करना है, बाहर की क्लास क्लास नेम डॉट मेथड नेम तो रेफरेंस डॉट क्लास नेम, 100% आप
सेम क्लास में यूज करना है तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो या क्लास नेम। तो conclude static methods you are call using class name, methods you are going to call using or that simple. Go through all of these combinations, try to take note, try to understand to the assignment. It is आपके पास चार ही कॉम्बिनेशन, चार कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, कोई भी क्लास की method चार जगह से कॉल हो सकती है। सेम क्लास स्टैटिक में डिफरेंट क्लास। तो इन तीनों केस में आप क्या करना है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस डॉट, यहाँ पर डायरेक्टली आप मेथड नेम लिख, और स्टैटिक मेथड आप कहाँ कहाँ से कॉल कर सकते हो, चार जगह से कॉल हो सकती है। कहाँ से, सेम क्लास इंस्टेंस मेथड, सेम क्लास स्टैटिक मेथड, डिफरेंट क्लास इंस्टेंस मेथड, डिफरेंट क्लास। तो इन सारी, अभी इन दोनों में तो आपको पता ही है क्या कॉल करोगे आप, क्लास नेम, या आपके पास रेफरेंस का 100% आप क्लास नेम, यहाँ पर आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो क्लास नेम। इन शॉर्ट आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको ठीक, जस्ट गो थ्रू दैट।